Good morning to everyone. This is the chapter we will start today in front of your screen, ratio analysis and interpretation. What I have done is, we have done the vertical balance sheet. We have discussed the format in the first chapter. Now simultaneously, we will start with the ratios. So ratio is what? Ratio shows the relationship between two numbers. Generally, what is a ratio? It shows relationship between two numbers. Here in ratio analysis also, what we will be doing, ratio analysis is the process of computing, calculating and presenting the relationships between the items in the financial statement. Means what we will be doing here, we will be calculating, we will be computing and presenting the relationship between the items in the financial statement. And financial statement includes trading account, P&L account and balance sheet. Here in our chapter, trading account and P&L account is referred as a revenue statement or income statement, and our balance sheet. We have already done our balance sheet in vertical form. कैसे वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, that we have done. Now what do the management want? They want to know what is the performance of the company. So to find out the performance, ratio will help us. Ratio analysis से हमें समझ में आएगा the relationship between the items in the financial statement. We can compute. Is a process. It is a process to compute the relationships. So this we will be doing with this chapter. So what type? See, this is a formula based chapter. So ratio analysis may you will have small formulas. So if it's a multiple choice question exam, if it's an online exam also, you have to memorize the formulas. So if whatever formula, it is easy, I will explain you all the formulas and you'll have to by heart, and we will be doing the sums based on these formulas. The forms, the types here, what all type forms are there in ratios? There are three forms: pure ratio, percentage ratio and rate. Pure ratio is a simple division of one number by another. So here what we do, simply divide one number by another, so that you will get a example of pure ratio. For example, we may say current ratio. Current ratio shows us the relationship between current asset and current liability. It shows us the short-term solvency position of the business. So current asset को divide किया current liability से. Suppose current asset 2 लाख है और करंट लाइबिलिटी 1 लाख, इनको डिवाइड करने पे जीरोस कट किया, हमें आंसर आएगा 2/1. तो उसको हम प्योर रेशो में कैसे लिखेंगे? 2:1. दैट इज द एग्जांपल ऑफ pure ratio. Then we have percentage ratios. So percentage means what? Certain accounting ratios become more meaningful if expressed as a percentage. अगर हम किसी को percentage में, जैसे for example, instead if you see, suppose you have appeared for the exam and you have got some marks out of 700, you have got some marks. So but अगर वो marks के बदले में अगर वो percentage में express करे तो ज़्यादा वो meaningful लगता है. जैसे for example, in a company, gross profit is suppose the gross profit, net profit, gross profit is 10 crore, net profit is 5 crores. But number से अच्छा अगर इसको percentage में express किया, the gross profit is 10%, net profit is 5%, then percentage becomes more impactful.
So कुछ ratio, there are some ratios which are expressed by way of percentage. They are known as percentage ratios. Then there are some ratios wherein we calculate the number of times, that is rate. So sometimes ratios are expressed as rates, that is number of times over a certain period. So relationship between stock and sales is expressed in this way कि हम लोग का स्टॉक कितने बार सेल होता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स आर वी आर एबल टू कन्वर्ट अवर स्टॉक इनटू सेल्स, नंबर ऑफ टाइम्स. तो इसको 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, 10 टाइम्स, these ratios are expressed on the basis of number of times, that is known as rate. तो ये 3 तरीका है, मेथड्स है to express our ratios. It may be a percentage ratio, तो उसको is to 1 में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं. परसेंटेज रेशियो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रेट, नंबर ऑफ टाइम्स के हिसाब से 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 10 टाइम्स. देन based on financial statement, what we do, this is also important, we classify our ratios into 3 types: balance sheet ratios, profit and loss account, that is revenue ratios, that is here we can write profit and loss के बदले में it will be more impactful if I write revenue ratios. Revenue statement ratios. So balance sheet ratios, revenue statement ratios, and both. Now what does this mean? बैलेंस शीट रेशियो मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आता है, रेवेन्यू स्टेटमेंट आता है ना. व्हाट इज रेवेन्यू स्टेटमेंट? इट इज combining trading account and profit and loss account together is known as revenue statement or income statement. तो सब कुछ आ गया इसमें. तो what do we mean by balance sheet ratio? If the ratios are based on the figures of balance sheet, they are called balance sheet ratios. Means when we are comparing the items in the balance sheet, one or 2 or more than 2 items from the balance sheet, जब हम comparison करते हैं, it is known as balance sheet ratios. Now when ratios are based on the figures from the revenue statement, or when we are doing the comparison of the items in the revenue statement, it is known as revenue ratios. Then what is combined or composite ratios? When we are doing comparison from between 2 items or 2 or more items, out of which one is, suppose there are 2 items, one item is taken from the balance sheet and other one is taken from the revenue statement, it is known as combined or composite ratios. जब हम दोनों में से एक एक चीज, जैसे for example turnover means sales, हमने लिया रेवेन्यू स्टेटमेंट से, एंड डेटर्स हमने लिया बैलेंस शीट से, एंड इन दोनों के बीच में हमने कंपैरिजन किया, हाउ मच ऑफ आवर सेल्स इज कन्वर्टेड इनटू डेटर्स, डेटर टर्नओवर रेशियो. तो देन दिस रेशियो इज अ कंबाइंड रेशियो, बिकॉज हियर डेटर का इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड सेल्स का इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द रेवेन्यू स्टेटमेंट. सो दिस इज नोन एज what we say combined or composite ratios. There are some formulas जहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट के ही आइटम्स को लेके फॉर्मूला रहेगा तो इट इज बैलेंस शीट रेशियो. रेवेन्यू स्टेटमेंट के आइटम से लेके करेंगे कंपैरिजन, देन रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियोज, रेवेन्यू रेशियोज. देन इफ वी टेक one item from balance sheet, another from revenue statement, then it is known as combined ratio, or we may also call it as composite ratios. So this way
there are three main types of ratios, but today we will start with the balance sheet ratios because we have already studied the vertical balance sheet ka format and we have also done sums based on balance sheet. So now we will be starting with balance sheet ratios. हम डिस्कस करेंगे. देयर आर 6 बैलेंस शीट रेशियोज जो मैं तुम लोग के साथ डिस्कस करूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सम्स ऑफ द बैलेंस शीट रेशियोज. And then after balance sheet, हम revenue statement का format explain करूंगी. We will do the sums based on the revenue statement and then we will do the revenue statement ratios. जब दोनों हो जाएगा, then the last type is a combined ratio, जिसमें हम दोनों में से study करेंगे, revenue statement से भी and balance sheet में से भी. Then it will be our combined ratio. ऐसे करके तीन types के formulas है which we will study one after another. So today we will be doing balance sheet ratios. Now let us, as I told you, let us discuss the balance sheet ratios. Now what is ratio analysis? It ratio, 1 minute. Ratio analysis is the process of computing and presenting the relationships between the items in the financial statement. The financial statement includes both balance sheet and revenue statement. This is what? This is a ratio analysis is an important tool of financial analysis because it helps to study the financial performance of the business. Financial performance, how the business is performing, and also to understand the position of the business or the business concern. So now what we will be doing today is we will be understanding the balance sheet ratios. We will be understanding the balance sheet ratio. Now what is a balance sheet ratio? Balance sheet ratios when comparison is made between two or more, because comparison के लिए तो minimum 2 items चाहिए. When comparison is made between 2 or more items in the balance sheet, within the balance sheet, it is known as balance sheet ratios. Balance sheet ratios. So now let us see the types of, let us discuss the types of balance sheet ratios. So एक-एक करके let us discuss the types of balance sheet ratios. The first one is known as current ratio. The first ratio is known as current ratio. So current ratio compares
1 minute. Current ratio, CR, short form for current ratio. I will write here. So current ratio compares the current assets with the current liabilities. Current assets with the current liabilities. This is example of प्योर रेशो. मतलब ये इस टू वन में एक्सप्रेस होता है. प्योर रेशो क्या है? जो इस टू वन डेसिम हम कैसे फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं. वन नंबर इज डिवाइडेड विद द अनदर, दैट इज अ एग्जाम्पल. एंड इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे 2:1 का एग्जाम्पल मैंने बताया था. दैट वे द standard current ratio is 2:1. Now what does this mean? Let us see the formula, then I will explain. Formula is current asset divided by current liabilities is the formula for करंट रेशो. इससे हमें करंट रेशो से हमें शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बिजनेस का पता चलता है. बिजनेस का कैसा पोजीशन है, करंट पोजीशन कैसा है, दैट वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ करंट रेशो. सॉल्वेंसी क्या है, लिक्विडिटी क्या है, कैसा कैश पोजीशन कैसा है, विच इंडिकेट्स, मतलब क्या, solvency position या liquidity position indicates the ability of the concern to meet its short term liabilities. कि कंपनी का liquidity position कैसा, how is it able to meet its short term liabilities. So that we will understand with the help of the current रेशो. तो यहाँ पे हम लोग इसको स्टैंडर्ड क्या मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर करंट असेट, यहाँ पे देखते, इफ करंट असेट में क्या आता है, यू ऑल नो, assets which are for a short term period, debtor, cash, stock, all are examples of current asset, is rupees 2 lakhs. एंड हमारे पास करंट लाइबिलिटी कितना है, सपोज इज रुपीज 1 lakh. सो व्हाट विल बी द करंट रेशो, देयरफॉर करंट रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस विल बी इक्वल टू current asset divided by current liability, which is equal to current asset तो 2 lakh है, current liability is 1 lakh. तो 0 कैंसिल करेंगे, आंसर क्या आएगा, हमें 2 आंसर आएगा. बट प्योर रेशो को कैसे एक्सप्रेस करते, मतलब हम यहाँ पे मानते हैं इफ करंट लाइबिलिटी इज 1 lakh, हमारे पास डबल द करंट असेट है. सो दैट इज द स्टैंडर्ड रेशो कि करंट असेट अगर करंट लाइबिलिटी अगर 1 है तो करंट असेट उसका डबल है 2. हियर यू कैन सी, इफ यहाँ पे अगर करंट लाइबिलिटी 2 लाख है तो करंट एसेट 4 लाख, तो वो स्टैंडर्ड रेशो हो जाता है. तो लिक्विडिटी पोजीशन अगर हमें 1 लाख पे करना है करंट लाइबिलिटी, तो हमारे पास उसका डबल 2 लाख है करंट एसेट upon current liability, and this is the pure ratio because it is expressed as is to 1, 2:1, 5:1,
4:1 मतलब डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको हम 1 अज्यूम करते हैं, तो न्यूमरेटर का नंबर कितना टाइम ज्यादा है, ऐसे हम लोग इस रेशो को एक्सप्रेस करते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत इजी है। अगर तुम लोग को किसी ने पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशो, सो यू विल से करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी इज द फॉर्मूला। तो फर्स्ट वन का फॉर्मूला हमने लिख लिया। दिस इज द फॉर्मूला, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द फॉर्मूला। फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला वाला चैप्टर है, सो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज ऑफ ईच रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। नाउ वी मे प्रोसीड टू अवर सेकेंड फॉर्मूला। The second will be our liquid ratio. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो जिसको हम क्विक रेशो भी बोलते हैं, और इसको हम एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। So एक ही का, that is different names of the same ratio. So liquid ratio, this ratio, what does it do? Compares liquid ratio, I've written in short form, compares the quick asset, compares the quick assets with the quick liabilities. Now when we were doing the format of the balance sheet, हमने देखा था क्विक असेट, करंट असेट में क्विक असेट होता है, नॉन क्विक असेट होता है, एंड करंट लाइबिलिटी में भी क्विक लाइबिलिटी और नॉन क्विक लाइबिलिटी होता है। तो ये जो लिक्विड रेशो है, ये सिर्फ क्विक असेट्स, करंट असेट में ओनली क्विक असेट्स को कंपेयर करते हैं, एंड करंट लाइबिलिटी में ओनली क्विक लाइबिलिटी, असेट्स एंड लाइबिलिटी विच आर लिक्विड। सो हम सिर्फ उसको कंपेयर करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ प्योर रेशो, दिस इज ऑल्सो अ प्योर रेशो, इसको भी 1:1 में एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ प्योर रेशो। स्टैंडर्ड क्या है इसका, स्टैंडर्ड liquid ratio is 1:1। तो इसका स्टैंडर्ड क्या है, 1:1। मतलब जितना हमारे पास लिक्विड लाइबिलिटी, सॉरी क्विक लाइबिलिटी है, लिक्विड लाइबिलिटी है, उतना ही हमारे पास लिक्विड असेट्स भी है। दैट इज द स्टैंडर्ड। जितना हमारे पास लाइबिलिटी पे करने के लिए है, उतना ही हमारे पास असेट भी है। सो the liquid ratio of 1:1 is regarded as standard liquid ratio, since quick liabilities can be paid out of quick assets as and when they arise. There is no need to have more quick assets than quick liabilities. जितना हमारे पास क्विक असेट्स है उतना ही लाइबिलिटी है, तो जितना अभी हम लोग इजीली उतना पैसा पे कर सकते हैं। सो दिस द स्टैंडर्ड इज 1:1। सो हम इसका फॉर्मूला देख लेते। लेट अस सी द फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है क्विक असेट डिवाइड बाय क्विक liabilities. This is the formula of liquid ratio, quick asset divide by quick liabilities. अभी quick asset क्या है, what is quick assets? Let us see that quick asset is equal to current asset में हम जब माइनस करेंगे स्टॉक, क्या क्या माइनस करेंगे, चलिए तो ऐसा मैं बताती हूँ, स्टॉक प्लस प्रीपेमेंट्स माइनस करेंगे तो हमें क्विक असेट मिल जाएगा। प्रीपेमेंट्स मींस व्हाट, प्रीपेड एक्सपेंसेस
what is it? Prepaid expenses, advance tax, and advance for goods. ये माइनस करेंगे तो we will get our, 1 minute, let me take this bracket here. So we will get our quick asset. Quick asset मतलब करंट असेट में से स्टॉक एंड प्रीपेमेंट्स हटा दिया. प्रीपेमेंट्स में आता है प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, एडवांस फॉर गुड्स, ये हटा दिया. वी विल गेट अवर रिमेनिंग विल बी अवर क्विक असेट. ना क्विक लाइबिलिटीज में क्या है? क्विक लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज में ओनली वन नॉन क्विक लाइबिलिटी है. करंट लाइबिलिटी में से माइनस किया बैंक ओवरड्राफ्ट, we will get our quick liabilities. So quick asset divide by quick liabilities, we will get our liquid या quick ratio. Quick asset divide by quick liabilities. This is the formula which you will have to remember. This is the formula which you will have to remember. So if say there are chances कि अगर स्टैंडर्ड रेशियो से ज्यादा रहेगा हमारा क्विक असेट, तो अगर स्टैंडर्ड रेशियो से ज्यादा रहेगा हमारा क्विक असेट 1:1 से ज्यादा रहेगा, तो इट सेज वेरी गुड लिक्विडिटी पोजीशन, as liquid assets are much more than the quick liabilities. Quick asset, liquid assets are more than the liquid liabilities. So high amount of liquid assets which may arise due to large balances lying idle in cash or bank. हमारे पास liquid assets ज्यादा है, मतलब हमारा कैश बैलेंस ऐसे आइडल रखा हुआ. इसका मीनिंग ये भी है हम प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, अंडर इन्वेस्टमेंट. इफ द स्टैंडर्ड रेशियो इज वेरी हाई देन 1:1 से हायर रहेगा तो, and if it is lesser than 1:1 it shows unsatisfactory liquidity position. The concern may not be able to pay its quick liabilities. Low level of liquid assets मतलब लो कैश और बैंक बैलेंस. ऐसे हो सकता है कि हमारे पास ज्यादा कैश बैंक बैलेंसेस नहीं है, या तो हमने ओवर इन्वेस्टमेंट कर लिया होगा. अगर हमारा 1:1 से कम रहेगा, हमारा स्टैंडर्ड से कम रहेगा हमारा एक्चुअल क्विक रेशियो, तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है ना. इसके साथ व्हाट आई विल डू इज आई विल stop here. I have done only 2 ratios. Total there are 6 balance sheet ratios, out of which I have done only 2 of them. Now 4 more are remaining, which we will be doing in the next lecture, and then we may also, if possible, we may also do sums based on the ratios. Now I have explained you all two of the formulas. Remaining formulas I will explain in the next lecture. With this, what I will do is I will end today's lecture. Thank you very much, everyone.